everyone, welcome or welcome back to my channel. This is going to be your relationship reading. आपकी करंट रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में जो भी इंसान है जिससे भी आपको ये कनेक्शन चेक करवाना है, उनके लिए ये रीडिंग होगी. ये है ग्रुप नंबर फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, ग्रुप नंबर 1, 2, 3 एंड 4. टाइम स्टैम्प्स आपके डिस्क्रिप्शन में हैं. टाइम स्टैम्प्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड. Your time for picking the tarot card deck that resonates the most with you. You can pause this video here if you want to take a better look, and I will start with group number 1. Group 1, so if you chose pile 1, this is going to be your reading. You can shift to another reading, but at least one party here, it seems, has gone off the way and has burdened their person too much, where the other person and that also has a reason why were they, and it's not like full on cheating. It is more like flirting online or something on those lines, where you are like, it's simpler rather, it's not so bad. Maybe even looking at the perspective of ki maybe instead of this connection I can look into some other connection. Even that kind of mindset itself is getting indicated here कि जो भी आपका कनेक्शन पहले से बना बनाया था उसमें किसी टाइप का ब्रेक तो आया है, उसमें किसी टाइप का माइंडसेट ब्रेक ज़रूर आया है, अगर पूरा का पूरा ब्रेक नहीं भी आया हो. और ये चीज़ें जो हैं दोनों पार्टी से हिडन थी. कुछ भी ऐसी बातें पहले नहीं हो रही थी, कुछ बातें पहले बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, कुछ बातें हिडन थी आउट ऑफ नोवेयर. एक पार्टी को पता लगता है, जो दूसरी पार्टी है वो भी काफ़ी मैनिपुलेटिव थी यहाँ पे, उसने भी कई तरीके से सिचुएशंस को अपने फेवर में लाने की कोशिश की है. सो आई एम सीइंग दैट व्हाई दिस सिचुएशन बिकेम सो बर्डनसम. बोथ हैड टू प्ले अ पार्ट. इट्स नॉट जस्ट वन पार्टी हैड टू प्ले अ पार्ट. बोथ द पार्टीज वर लाइक not being entirely trusting of life and connection, and were projecting their past issues into this connection. तो जो भी so what I'm seeing कि एक इंसान यहाँ पे, let's say person A, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बचपना है उसके अंदर, बालकपना है, और उस के चलते वो ऐसे लोगों से ही, और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनके बहुत सारे लाइक ही ऑलवेज कीप्स लुक्स लाइक एटलीस्ट ही कीप्स हिज ऑप्शंस ओपन. आई एम नॉट एट ऑल सेइंग दिस पर्सनस मोरालिटी, आई एम नॉट जजिंग, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस पर्सनस मोरालिटी इज बैड, बट द पर्सन बी, द पार्टनर, देयर पार्टनर इन दिस कनेक्शन, जज देयर मोरालिटी. देयर इज सम मोरालिटी डिस्कशंस और कंट्रोलिंग हैपनिंग इन द पास्ट that has led to currently finding out that, oh, we both have been like not 100% about this connection. Yeah, it's really beautiful outside. I feel this is about this connection also. There is certain beauty in this connection, childhood connection or something on these lines. There is very like pull towards each other. There is a strong soulmate connection over here, okay? And what happened is कि, as I said, that one person was generally manipulative due to their past patterns. For that, check some shadow work reading if this is you. And the other person who was rather open-minded, but they played along just to satisfy their partner, that you know they are not actually all that open-minded and they are also like small-minded, और वो भी इतने लोगों से बात नहीं करेंगे. और उन तो और क्या हुआ, एकदम से कोई ऐसी सिचुएशन बनी जिसमें कि ये सारा जो है प्रपंच वो बाहर आ गया. अभी क्या हुआ है, क्योंकि इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ये सिर्फ सिचुएशन बर्डनसम हुई है. मुझे ये नहीं दिख रहा है कि कोई भी यहाँ पे ब्रेकअप की कगार पे है या फिर इस तरीके की प्रॉब्लम है. लेकिन वन पर्सन, द पर्सन बी, इज़ नाउ फीलिंग लेफ्ट आउट एंड कोल्ड, इज़ नाउ फीलिंग लाइक कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने इस सिचुएशन को सब कुछ दिया फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. और लॉयल्टी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चंस होने लगे हैं. दो आई एम सीइंग कि लॉयल्टी रिटर्न होगी इस पूरे सिनेरियो में, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन या तो बहुत पुराना है या फिर इसमें या हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा है, पुराना है. और बट कहीं ना मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, you guys need a relationship contract. There needs to be where person A can tell ki these are my needs and they need to be fulfilled due to this connection, and the other person can say I will not tolerate this, or you are entitled to your own thoughts, you are entitled to your own time. There needs to be like trust built on rationality. There is lack of rationality in the connection. There is lack of contractual, or some things are just not talked about. Some things are the communication skills are weak of both the partners. So here person A
You are like feeling the person A is like, okay, what to do? I have opened these options, and it's mostly because of their persona. If there has been an actual cheating, which in this reality it doesn't show, in this reading it doesn't show that there has been an actual cheating. But if there has been a cheating, that's wrong. But if this is just like somebody talking to people outside of the connection, it is because they wanted to seek refuge, they wanted to seek some kind of solace. थोड़ा सा उनको अपने बारे में समझने के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए था, इसकी वजह से उन्होंने बाहर बात की है. और अभी क्या है, वो इस सिचुएशन में आप दोनों का जो लव है, एक द पर्सन इज़ फीलिंग अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स देयर पर्सन, द पर्सन इज़ फीलिंग दैट यू नो I don't want to be alone. I want to be alone at times, but not without this person. I do not want to live without this person, without my person B. So here the situation I'm seeing moving forward will be like कि आप दोनों ही इस सिचुएशन का जो गुड पार्ट्स हैं उनको देखना शुरू करोगे. देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन, देयर विल बी सम काइंड ऑफ मोर कमिटमेंट. द सिचुएशन विल कल्मिनेट इनटू मोर कमिटमेंट इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. And the person B will get what they want, which is a happy family. The more familial ties will be there in this connection, the less there will be outside influences, and the person A who owes an apology will owe an apology. The only advice here would be to work with both the problems. क्योंकि आपको दोनों के ही ईगो यहाँ पे ब्लास्ट हुए हैं. एक नई शुरुआत आपको करने की ज़रूरत है, और जो पुरानी एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, या जो ये स्टैगनेंसी की एनर्जी है, उसको निकालने की ज़रूरत है. वो एक बार निकल जाएगी तो आप एक ऐसी स्टेज पे आ पाओगे जहाँ पे आप एक नई स्टार्ट कर पाओ. अभी क्या है, स्टैगनेंट एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है कनेक्शन में एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत सारी बातें जो हुई नहीं है उसकी वजह से वो अंडर द कार्पेट डाली गई हैं, और वो अब बहुत बढ़ गया है. अब वो बहुत ही गलत जगह आके काट रहा है. तो ऐसे में क्या है कि आपको एक नई स्टार्ट करने की ज़रूरत है, बट राइट कम्युनिकेशन. आई वुड एडवाइस कि आप किसी काउंसलर से बात करो, लाइक अ कपल काउंसलिंग और समथिंग, जहाँ पे आप दोनों एक ऐसे निष्कर्ष पे आ पाओ जहाँ पे आप न्यू स्टार्ट, फ्रेश माइंड से न्यू स्टार्ट कर पाओ. क्योंकि अगर पर्सन बी की जो पर्सनालिटी है, जितना मैं जज कर पा रही हूँ, ये इंसान बहुत ब्लेम गेम करेगा. ये इंसान बोलेगा तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया. जितनी गलती नहीं होगी उतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएगा. पर्सन ए हेयर, एटलीस्ट इन दीज कार्ड्स, लुक्स रादर, they come across as a dumb persona, they come across as a puppy persona, dumb persona, somebody who just enjoys life and nothing else. And person B actually appreciates it in their person, that okay, they are light-hearted, so my heaviness is not felt so much in this connection, but your heaviness is taking over from the other side. While person A is committing mistakes, you are contributing to it. It's not like due to the over postponement of things that could have been talked about, जिनके बारे में बात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, उन चीज़ों को पोस्टपोन कर करके आज ये चेंज आया है. सो जो भी ये रीडिंग रिसीव कर रहा है उनको क्या रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, दैट इज़ माई लास्ट मैसेज ओवर हियर. व्हाट डू यू नीड टू रियलाइज़? द वन, you need to be the guide of this connection. Whoever is receiving this reading, you need to guide your connection in a way जहाँ पे थोड़ी एक पाथ एलिमिनेट करो, आगे की फ्यूचर बनाओ. फ्यूचर में आपको करना क्या है इस रिलेशनशिप का, इस बारे में सोचो. एंड हैव सम करेज. देयर आर अप्स एंड लोज इन एनी कनेक्शन. किसी भी कनेक्शन में ऐसी चीज़ें आते हैं, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे एक इमोशनल स्ट्रेंथ के साथ और गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो. मून और जुपिटर की एनर्जी को साथ में लेकर के, गाइडेंस और एक्सेप्टेंस की एनर्जी को साथ में लेकर के आगे चलो. आपको इस रिलेशन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे. So group 1, this is what I have for you in this reading. I hope this resonate. If it does, leave me a like or comment. And thank you so much for joining me here today. I'll catch you in some other reading. Bye for now. You can also follow me on Instagram for more. Hi group 2. So here I am seeing deceit. There is a lot to unpack here. आई एम सीइंग ये कनेक्शन नया नया बना है, इसमें डेटिंग का सीन ज़्यादा लग रहा है मुझे. ये शादी या डीप कमिटमेंट नहीं है. दिस इज़ डेटिंग. समबडी इज़ डेटिंग हेयर, एंड द पर्सन दैट they are dating, or they themselves have some double standards here. So with the 5 of swords here, this is like somebody जिसको हमेशा टॉप पे रहना होता है, जिसको हमेशा ही अपना ऊपर हाथ
चाहिए सिचुएशन में, दूसरा इंसान चाहे सफ़र भी करे, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। रिलेशनशिप को माइंड गेम्स के थ्रू करना, ये उसके बारे में है। एक इंसान यहाँ पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है दूसरे के स्टूपिड बिहेवियर की वजह से। समबडी हियर, let's call them person A, is very hurt in this connection because they have felt left out, they have felt like कि उनका कोई सुनता नहीं है, उनका कोई रिलेशनशिप में से इतना ज़्यादा होता नहीं है, और दूसरे इंसान की स्टूपिडिटी की वजह से, इस फुलिश बिहेवियर की वजह से ये हुआ है। और अब जब उन्होंने ये चीज़ एक्सप्रेस की है, वन पर्सन ए हैज़ एक्सप्रेस्ड, ओके, सो जब हर्ट हुआ तो उसकी वजह से क्या रिजल्ट निकला, सिचुएशन में डिस्टेंस आ गया एक कि यू नो मे बी दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, दैट काइंड ऑफ थॉट केम थ्रू। ये चीज़ पर्सन बी को एक्सेप्ट ही नहीं हुई कि आप मुझसे डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं। दे स्टार्टेड फाइटिंग, दे स्टार्टेड टेकिंग इट पर्सनली कि यू नो आई एम नॉट somebody that you can ignore, you have to attend to me. Just by setting boundaries, person A ended up disrespecting person B, which is very weird. Like, I do not understand this. Just by setting boundaries when you have already hurt the person, how can you take it as a sign of disrespect? So yeah, the first point here, which is this thing, it is happening, it is some deceit is happening. So the person here is like, you know what, you have hurt me, I gave you the chance, you've hurt me, and these are my boundaries, it's done, it's over. Person B is like, I will fight you, you are this kind of person, I do not accept this, and I will tell you how you were. Rather, there can be some slut shaming also, so there can be some like you know, oh, once you have been with me nobody else will be with you, or something on those lines coming up. A lot of projection happening just because of somebody called the bullshit out that the other person was playing. And moving forward, what I'm seeing is the person B will end up respecting the boundaries. They will see that okay, I have to be at distance, अब ये सब चल ही नहीं सकता है, ये सब ओवर हो चुका है, ये चल नहीं पा रहा है। ये चीज़ का एक्सेप्टेंस पर्सन बी को आएगा, और तब इस पूरे किस्से में नई शुरुआत होगी। अब वो नई शुरुआत ऐसी भी हो सकती है कि आप दोनों फिर से बात करो, और ये भी हो सकता है कि आप दोनों नए लोगों से बात करो। जो पर्सन ए है, आई एम सीइंग दे विल गो ऑन पाथ ऑफ हीलिंग, दे विल heal themselves from feeling all the pain that they have felt, they will come out of feeling so burdened. Advice for person A here is the one who has been hurt, person A, the advice for them is to not show their pain to others, especially to the person B. Do not show your pain. अपना दर्द मत दिखाओ, ज़्यादा आपको बात करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा छुपाओ चीज़ें, क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप अलोन हो, आप जीत रहे हो सिचुएशन में, पर आप इस वक्त अलोन हो। आप इस वक्त एक ऐसे बर्ड जो होता है ना कि आप थोड़े टफ़ टाइम चल रहा है आपका, और जो टफ़ टाइम होता है ना तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है वाली सिचुएशन है। आपको पता है कि आप ये डिज़र्व नहीं करते हो, आपको पता है कि आप इससे बेटर इंसान डिज़र्व करते हो, आप इससे बेटर ट्रीटमेंट डिज़र्व करते हो, आप इससे बेटर फ्रेंड्स डिज़र्व करते हो, आप इससे बेटर एक जनरल लाइफ इससे आप अच्छी डिज़र्व करते हो। पर वो आपको धीरे धीरे करके बनानी पड़ेगी। आगे बढ़ने के लिए आपको अपने ऊपर ही विश्वास करना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल सबसे स्लो चलता है, इसके पास आइडियाज़ होते हैं, ये धीरे धीरे बना रहा होता है उनको, और लेकिन ये हमेशा ग्रेसफुल रहता है। सो ये समझो कि ये अभी टफ़ टाइम है, ये निकल जाएगा, ये बर्डन का टाइम है, ये निकल जाएगा, लेकिन आप जो मूव्स कर रहे हो वो सही हैं। इस वक्त किसी और को अपना दुख मत दिखाओ, किसी और को ट्राई टू वर्क ऑन बीइंग ऑथेंटिक बट विद इन योर सेल्फ, नॉट विद अदर्स। ज़्यादा औरों को, क्योंकि मैं नहीं देख रही कि आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको इस सिचुएशन में सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंड दिस पर्सन बी, this is very shocking that this person B is this person will still try to make things look like nothing happened. Person B is still going to be very childish about the whole thing, very much like I think we can patch this up, or maybe that is not a big deal. If this person B is a man, they are not manly inside of them. This is not a good man. That's a big thing to say, but this is, at least now in this timeline, they are not coming across as strong masculine energy. This is somebody stuck in their feminine, a man stuck in their feminine energy, meaning they are not able to ground themselves. They are ungrounded, childish, okay.
And in this connection, how it is reflecting is when they avoid main topics, they whenever they meet, they try to have good time, get the good best out of the situation, and then do they see everything. They are very observant, they are very chalak, they are very intuitive, but they do not acknowledge things. That doesn't mean that the person A does not have all the qualities that they seem to have. In fact, person B may also be jealous of person A because of how they are kind of out of their league, or kind of like, you know, better than them at human level. And this can be like a, you know, jealousy factor in person B. And yeah, that's why they like come into competition, अपने ही person से compete करना. Well, this is not okay, man. Relationships में competition जब आ जाता है, जेलसी आ जाती है आपस में एक दूसरे से, तो उनका ख़त्म होना निश्चित है. जब तक आप दोनों साथ में मिलके कदम से कदम मिला के नहीं चलोगे, तब तक कोई रिलेशन, चाहे वो ओपन रिलेशन ही क्यों ना हो, वो नहीं चल सकता. आपको तालमेल बिठाना पड़ेगा. सो about this connection, I'm seeing right now it is going through point of conflict, and I hope that the person B becomes a better mature person. And the advice for them is to actually listen to their intuition. The advice for person A is to be authentic, work on getting more and more authentic, and do not show people your pain, the ones who do not support you, who do not love. और कुछ लोग होते हैं ना, आप उनको अपना पेन बताते वो करते हैं, you know they are not empathizing with it, you know they don't want you to heal out of it, you know that they are somewhere enjoying it. Don't, even if they are your best of friends, don't go to them. Let's see what is the guidance for the person who's receiving this reading. Love is definitely here. What is the guidance for wisdom and clarity? Learning, joy, art, music, planning, releasing illusions. Yeah, this whole situation needs to be released, left behind. This whole situation needs to, somebody here needs to move forward and build their own world, work on creation, expansion, networking, meeting with people, all these things, and work on your clarity, work on bringing clarity into the situation as well as within yourself. जितना आप अपने आप में clear होगे, उतना यहाँ पे situation में clarity भी ला पाओगे. So group number 2, this is what I have for you in this reading, and I hope this resonates. If it does, check other readings on my channel. I will now move on to group 3. Thank you so much for tuning in. The ways to contact me for a personal reading are in the description of this video. Bye for now. Hi group 3, welcome to your reading. तो आपकी रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में एक नई शुरुआत हुई है, या तो एक नया ही सिचुएशन है, बिल्कुल नया नया डेटिंग का टाइम है. यू आर टेकिंग वन डे एट अ टाइम, एंड दिस इज़ कमिंग थ्रू एज अ मैसेज. वन डे एट अ टाइम, देयर इज़ सिंड्रेला स्टोरी गोइंग ऑन, मीनिंग वो एक रात को जाके इन्जॉय करती है. और या दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि आपके साथ भी हो रहा है. मे बी आप बस जो करंट टाइम है इस सिचुएशन में उसको इन्जॉय कर रहे हो और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो. आई एम सीइंग कि जो पर्सन ए है, यहाँ पे हम दो लोग को लेके चलेंगे, पर्सन ए एंड बी. सो जो पर्सन ए है यहाँ पे, उनकी स्टोरी इस तरीके की है कि वो इस रिलेशनशिप में बहुत पोर इन करते हैं, स्पेशली मेंटली, फाइनेंशियली वो बहुत इस सिचुएशन में पोर इन करते हैं, क्योंकि उन्हें इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, बचाने का बहुत ज़्यादा मन है. जो पर्सन बी है यहाँ पे, वो रिसीविंग एंड पे, वो बहुत रिसीव करते हैं इस सिचुएशन में. वो खुद को लकी फील करते हैं, अपनी जगह से ज़्यादा हिलते नहीं हैं, वो ज़्यादा मूव नहीं करते हैं. दे स्टे इन देयर प्लेस अलॉट, दे ट्राई टू एन्जॉय दिस सिचुएशन. दे थिंक कि दे आर देयर इज़ लाइक frog prince kind of story going on. So the person B is lucky for person A, and there has been this there has been this good vibes. The goodness in this connection is that person B is lucky for person A, and that is why person A pours into the person B. They try to be more giving than they can, okay, and while the person B sometimes can be stopping themselves from giving, I'm seeing here morality issues. I'm seeing here some kind of like guilt होता है person B को, लेकिन बाद में होता है. they are somewhere, okay, so person B here can be somewhat hedonistic, somewhat like अपने ही दुनिया में रहना, but चीज़ें enjoy करना, at least mentally hedonistic, like whatever it can, take how it resonates, okay. देयर कैन बी सम काइंड ऑफ कि मैं अपनी ही दुनिया में रहता हूँ या रहती हूँ, और मेरे को औरों से ज़्यादा मतलब नहीं है, और अपनी इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा खुश रहना.
or you know, yeah. And this is again dating scenario, and so in this dating scenario the person B is very happy in their own world while person A wants their person B to open up. And this thing has been long coming. Person A has been waiting. There has been too much wait. There has been too much wait for the for person B to open up. Okay, so somewhere I'm seeing that person A, though they are very giving in this relationship, they have mentally broken up with person B quite a few times. There can be कि person A has a few times thought कि maybe this relationship is not going to work out. This relationship is not going to be the one, because she or he never open up. They never open up. The person B never opens up. They do not come to me as they are, and they rather try to play this high priestess. Person B here is very secretive, very much in their own world, very much tries to control, but passively. This is not active control. This is like trying to control the mindset of the person. So the person A here is like parched. They उन्हें पता ही नहीं, वो इतना इमोशनली उनके पास ये रिलेशनशिप जो है काफ़ी हैवी हुआ है पास्ट में, और उनको बर्डनसम लगा है ये रिलेशनशिप, उनको हर्ट हुआ है, एंग्जाइटी हुई है. द डेज व्हेन पर्सन बी इज़ लाइक बीइंग सीक्रेटिव, द पर्सन ए क्राइज their nights out. There is this 9 of swords energy, crippling anxiety, overthinking, wanting to make this happen, but it does not happen. And this kind of thing has been happening. So this relationship, in one word if I have to describe, it's intense. This is intense. This is like wow, like and this relationship needs to release a lot of heavy energy. This relationship needs to let go of the past. Both need to let go of the past. Both need to have a new start. And the person A is not getting much out of this connection. Actually, if I were their friend, I would be like, maybe you don't deserve this, maybe you should get out of here. But person B can be like a witch, can be very intuitive person, and they are holding back due to some reason, their mother's involvement or something on those lines, where they want to test the waters before they get into it. But how long are you going to test a person? And where there is जहाँ प्यार होता है वहाँ आजमाइश नहीं होती. सो आजमाने वाली जो एनर्जी है पर्सन बी की पर्सन ए के टूवर्ड्स, वो बहुत ड्रेनिंग है और काइंड ऑफ अब्यूज़ल भी है, मेंटल अब्यूज़ल है ये. तो ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी और डेप्थ लेकर के आती है इस कनेक्शन में, जहाँ हर कुछ पर्सन ए ऐसा करना चाहता है जो उनका पर्सन अप्रिशिएट करे, और वो अप्रिसिएशन उन्हें चाह के भी नहीं मिलता. देयर कैन बी सर्टन नार्सिसिज्म इन पर्सन बी. सो आई विल नाउ सी कि व्हाट इज़ लाइक द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. Okay, somebody here, okay, this situation is inviting divine masculine. This situation is inviting divine masculine. There has been too much space creation for masculine energy, and masculine energy is going to land in this. There are going to be some situations which will change the course. Tables will get turned in some way. This situation is going to turn on its लाइक बहुत कुछ यहाँ पे टर्न होने वाला है. जो इंसान डर में था वो बैलेंस में आ जाएगा, और जो इंसान बिल्कुल बात नहीं करता था वो इनिशिएट करने लगेगा बातें. सो it looks fine, it looks good. Let's see what is the guidance message for the one who's receiving this reading. Whoever is receiving this reading, I want to tell you one thing. अगर आप पर्सन ए हो, मतलब कि आप वो इंसान जिसके अगेंस्ट ये पूरी सिचुएशन जा रही है, जिनको ये क्रिपलिंग एंग्जाइटी हो रही है, जिनसे उनके इंसान बात नहीं करते हैं, आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? देयर इज़ शैडो वर्क हेयर. आई थिंक आई शुड जस्ट मेक शैडो वर्क रीडिंग, क्योंकि मैं हमेशा शैडो वर्क पकड़ लेती हूँ. आपकी लाइफ में जो भी होता है वो किसी और के वजह से नहीं होता है, वो आपके खुद की वजह से होता है. और यहाँ पे क्या है कि क्यों हो रहा है ये आपके साथ? क्योंकि आपने अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया है. आप लोगों का वर्ल्ड बनाने के लिए चले जाते हो. You try to build other people's world. You do not build your own world. So now you are in relationship with someone who builds nothing, who just sits there and builds dream, who dreams too much, and who has blockage with their moon. Though they think that they are very intuitive, very like aligned, but they are aligned with what? Their own imagination. That's all. Nothing of practicality. So, and it is not evil. I'm not saying that this person is evil. Yes, there is hint of narcissism because their imagination is strong, but it is not evil. Rather, person is self-beating.
not going for balance, not going for their self, not standing firm in their opinions is problematic. So here person A, if you are person A who's receiving this reading, you need to do shadow work of why do you think that you need to go out of your way to make people happy, or why do you think that others only, why you have given the key to your happiness in other people's hand, why is it not in your hands? So somewhere there is some shadow work. देखो कुछ लोग होते हैं ना जो, जैसे कि एक ग्रुप है, आपकी फैमिली है, कोई आपको प्यार करता है, कोई आपसे प्यार नहीं करता है, लेकिन आपको उसी का वैलिडेशन चाहिए जो आपसे प्यार नहीं करता है। जो प्यार करता है उसकी तरफ आप देखते भी नहीं, आप उसकी तरफ टॉक्सिक हो। तो यही यहाँ पे हो रहा है कि यू नीड टू सी कि किन के साथ आपको अलाइन करना चाहिए और कौन आपके लिए अब्यूजिव होंगे। मे बी यू आर एडिक्टेड टू ड्रामा, मे बी यू आर द वन हु नीड्स ड्रामा टू फील एंटरटेन्ड. So, I hope this resonates. It was a little tough, but I hope this message goes through wherever it needs to go through. Connect with your psychic abilities, connect with balance, stand firm in your opinions, and work these patterns out of your heart where you think that abusal is okay, or where you think that not performing is okay, or not letting go is okay. You have to let go. You have to let go, especially mental patterns, especially things that जो बार बार आप सोचते हो, जो spiral आप करते हो, it's not healthy. It is crippling anxiety. It's not healthy. So you need to let go of a lot of self-beating and self-destructive thought patterns, and that shadow work, once you do, even this situation will resolve. You will see your person will respond to you differently, or you will balance yourself out in a very harmonious way. सामने वाले से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, उससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दे विल गिव द वर्ल्ड टू यू. उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, उसके खुद ही इतनी परेशानियाँ चल रही हैं, वो खुद ही परफॉर्म नहीं कर पाता ये इंसान. दिस इज सेल्फ सैबोटाज मैक्स. पर्सन बी इज सेल्फ सैबोटाज मैक्स. So this person is not able to perform in life. How will they perform in relationship? So it is your fault कि जिसके पास आँखें नहीं हैं, आप उससे रास्ता पूछने जा रहे हो. So find your way yourself. Believe in yourself. Do the shadow work and see why are you invested in people who are not there to love you. Rather वो आपको आजमाते हैं and you're somehow okay with that. It's not okay. It's not okay to put yourself in such situations. Use your consciousness. Use your third eye. So this is what I have for you in this reading. I hope this resonates. If it does, leave a like or a comment, and you can follow me on Instagram for more. Ways to contact me for a personal reading are in the description of this video. I will catch you in some other reading. Bye for now. Hi group 4. I'm feeling very like different about you guys. Temperance and the Emperor wanted to come out. These are the energy of balance and work. So somewhere there is work-life balance required. I'll start it again. What this is going to be about? Again, we are seeing dating scenarios here. Page of Cups. This is like a new start, love message. Okay, this is, yeah, so this is good. This is like a new love message, new start, new feelings, you know, and message of love. Somebody here is very happy, is like going on a beach and enjoying themselves, is like yeah, there is like good stuff going on here. There is happiness, there is acceptance, love, and King of Pentacles. So the person here is, let's call them person A. Person A is very balanced, grounded. King of Pentacles knows where their money is, knows where their heart is grounded. Can be a family person, family man kind of situation going on. And yeah, the Tower card here is the Tower is like breaking of ego. Maybe they had a spiritual awakening, and this love that they are finding is after the spiritual awakening. So a grounded man finds love after a spiritual awakening. So far so good. And the Magician and the Four of Pentacles. This person is still figuring their consciousness out. This person is for the relationship, you get the King of Swords, Knight of Swords, Five of Pentacles. I'll go into it, don't worry, just stay tuned. Let's see more. Five of Cups. Okay, Temperance. Yeah, Temperance comes again. Fool. Ace of Swords. Woo! High Priestess. I see what's happening here. Here, a person is person A is getting into spirituality, but the person B is already like a pro in spirituality. So spiritually, this is a charge reading. This is like spiritual daters. So
So these spiritual daters are excited. This is like new love. There is confidence in this connection. There is love, and sometimes the person B, though, who is spiritually more evolved, the person B has gone through extreme breakups, has gone through a lot of heartaches. Maybe you have opened up to wrong people, you have opened up too much, and that is why sometimes communication is not very easy in this connection, because person B, who is rather emotional and intuitive and spiritual, has gone through breakups that need to heal. Now, एंड दिस इज़ लाइक अ बटरफ्लाई इफेक्ट. जब पर्सन बी को ऐसे सिचुएशंस में गो थ्रू करना पड़ रहा था जहाँ उन्हें हील करना पड़ रहा था, यू गाइज आर सोलमेट्स. तो बटरफ्लाई इफेक्ट ऐसा था कि पर्सन ए को तभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई व्हेन देयर सोलमेट वाज गोइंग थ्रू सो मच पेन. सो yeah, you guys might have this communication is easy yet restricted, very unique. There is a bird, there's a sparrow here. Okay, we'll receive those codes as well. So here I'm seeing that the fight has happened already in your both personal life, and now you have come into this connection. I am seeing that you are both somehow going to be taken away from each other before you will be allowed to come back together. There is still one little more test left. You have already given a lot of tests, and a small test will come as distance, physical distance. And in this, person A will be chasing the person B, and they will prove their love to you. Person B is going to finally experience the love that they have been waiting for. One advice for person B: do not engage with anything. Be in high priestess mode. Be in your own self, enjoy your own self, be in this calm and focused mode, and enjoy your awakening. Do not let anything stop you. Do not be invested too much in the relationships. Your lesson is about, you maybe get too much invested in other people, and your lesson is about balance and patience. Your lesson is about letting things flower instead of forcing them to become something. And this has been a lesson that has been slapped across your life. So you have to have, now you have gained this clarity, and universe will test you that if you stayed on to this clarity, if you get too attached, or you keep with your life, you move on with your life in a way जो कि आपके लिए हेल्दी है, जो कि आपके लिए ज़्यादा सक्सेस लेकर के आएगा, ज़्यादा क्लैरिटी लेकर के आएगा, ज़्यादा आपके करियर को बढ़ावा देगा. यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई एक इंसान, पर्सन बी में भी यू आर लाइक, आप छोटी छोटी बातों का बुरा मान जाते हो. सम वर्ड्स हर्ट डीप टू यू, डीपर टू यू देन other things. There is very much sensitivity here, and that needs to be honed, that needs to be worked with. And this is like more personal message, but you need to work on your sensitivity, your consciousness, connecting with consciousness. You end up abusing your consciousness, abusing your higher self because of your emotional sensitivity. And just because किसी ने कुछ कह दिया तो आप अपना रास्ता बदल लोगे. जस्ट बिकॉज किसी ने आपको जज कर लिया तो आपको भी वो जजमेंट अपने बारे में आ जाएगा. सो दिस थिंग यू हैव टू चेंज विद इन योर सेल्फ. फॉर पर्सन ए, आई एम सीइंग दे नीड टू, though they have a good money understanding, they still need to work on their treasure money and keep their energy to, अपनी एनर्जी को आपको, for person A, you do not have to invest energy in multiple things. Just because this person B is much more evolved than you, do not feel intimidated, do not feel like, oh, maybe I need to go somewhere else, maybe I need to conserve, maybe I need to harvest more from somewhere else. Do not open your options, because that will be the end of you. This person B is not here to play. They are going to call out any kind of messing. So do not mess around if that has been your nature. Though I'm seeing that you have now evolved as this family man, with what is the term coming through, but you may have the tendency to feed your ego while keeping your options open, and that won't work in this connection at all whatsoever. The future of this connection, I'm seeing, as I said, there is a small test, some bottlenecking process where you both will learn to align with each other, and you do not have to do anything about it. You just have to stay in your power. If you stay in your power, if you strengthen this connection,
if you water this connection, if you keep connecting with each other, even if it is small, keep connecting with each other and keep your loyalties for each other alive, you will get through this time. You do not have to do much. There is not, and this bottlenecking is not going to be very tough process. It is more like a transition into something else, transition into something bigger. And person A, I'm seeing that you will be falling in love with person B like never before. This is like falling in love. The best scenario that I can imagine here, or I can see here, is like that you both will be falling hard for each other, extremely, like strongly. Guidance, connect with the guidance. Yes, connect with the goddess, connect with the guidance here, connect with the yeah, flowering again a goddess. So yeah, connect with प्रिंसिपल्स ऑफ फैमिली. प्रिंसिपल्स, मे बी यू लिव इन अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, या आप ऐसे पास से आ रहे हो जहाँ फैमिली को इंपॉर्टेंस नहीं देते. पर यहाँ पे आई एम सीइंग लॉट ऑफ फैमिली मैसेज आर कमिंग थ्रू दैट यू गाइज हैव टू रियलाइज यू गाइज आर, मे बी यू बिलोंग टू द सेम सोल ट्राइब, सेम सोल फैमिली. दैट इज़ वाई इट इज़ कमिंग थ्रू. यू आर पार्ट ऑफ द सेम सोल फैमिली and you have just met in this life, so you can help each other flower, you can help each other. Even the money situation, that person A, though they are well money minded, but they are not able to conserve money, person B's presence will help them in conserving the money. You have to connect with higher guidance. I would suggest, if you're having any issues, go for a counseling or some kind of guidance. Connect with a guru, connect with somebody who can help you get over this mentality of loss and lack. And there is going to be some setting the correct boundaries. As I said, for person B, you need to be grounded and not make small things into big things. And for person A, you do not need to take other people setting boundaries or saying their word too personally or against your ego. You have infinite possibility, but do not be a manipulator. Person A, be a lover. Okay, that's how you can save this connection. Very exciting, very beautiful. And yeah, I am very happy for you guys. It is mostly positive. A lot of this is positive. So yeah, just go through this bottlenecking process with rather trust on life and trust on each other and communication with each other, and you will come onto the other side like the power couple that you both have the potential to be. So thank you so much everyone for tuning in with me today, and check other readings on my channel. You can also check my other YouTube channel for some guidance energy, and as I call it, older sister energy. I help you connect with your sensitivity, your intuition, your deeper self more and more. You can also follow me on Instagram, and the ways to contact me for a personal reading are in the description of this video. I will catch you in some other reading. Bye for now.